Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the next basic concept of chemistry. Okay, so we take the some different types of concept in the chemistry. First of all, we take the what is the electronic configuration. So we take the point here, the what is the electronic configuration. Electronic configurations. Okay, dear student, we discuss here the question, what is the definition of electronic configuration. So the electronic configuration is defined as the distribution of electron or addition of electron in shell and subshell called as electronic configuration. You know, we learn about the shell and subshell in 10th class. How many shell and how many subshell? So we take here the also the example. So shell, what we take here? The shell and subshell. Shell is also called as the orbit, whereas subshell is called as the orbitals. What here beta? Orbitals. Clear beta? You know how many subshell? So there are 4 subshell K, L, M, N, O. 5 subshell, and there are 5 shell that is called as orbit K, L, M, N, O, and 4 subshell or orbital called as S, P, D, and F. Clear? Okay beta. Now question is what here? The distribution or addition of electron into shell and subshell or orbit and orbital called as the electronic configuration. Clear beta? So we added electron in a shell and subshell called as what? Electronic configuration. Clear? Okay. Now each shell and subshell have some valency. Valency means capacity. Clear beta? Valency is nothing but the capacity. For example, the valency of K shell is 2. Means in a K shell there is only one, there is a 2 electron are added. क्लियर है बेटा? यानी K shell जो है उसकी वैलेंसी 2 है बेटा, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेगी हम लोग, उसकी कैपेसिटी 2 की है. L have the valency is 8, M have the valency is 18, then N 32 and O 50. क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे शेल में सब शेल में तो K में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग? 2, L 8, M 18, N 32 and O 50. Clear? Same here, the valency of subshell or orbital have also different. As well the valency is 2, P is 6, D is 10 and F is equal to what here? 14. Clear? The K shell is also called as what? Shell number first, shell number second, then third, and then fourth, then fifth. Clear? Now question is that what here? What is the electronic configuration of carbon, or how to write the electronic configuration of any element? अगर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो सिंपल रूल क्या रखेंगे हम लोग? वी टेक द वन रूल, दैट इज द रूल विच हेल्प टू write the electronic configuration of any element. The rule is called as what here, or the principle is called as what here? So we take the principle, Aufbau principle. What here? Aufbau principle. Aufbau is the name of scientist. He give the principle called as the Aufbau principle. This principle are help to write the electronic configuration of any 118 element. क्लियर है बेटा? ये रूल काय के लिए हमको एप्लीकेशन करेगा, हेल्प करेगा कि अगर आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखना है, राइट करना है, तो वो इस रूल का हेल्प करके हम लोग वो इलेक्ट्रॉन की वो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं. ठीक है? नाउ वी टेक द अब्बो प्रिंसिपल. सो दिस प्रिंसिपल हैव अ डायग्राम, and this diagram are help to write the electronic configuration of any element. Clear beta? For example, we take the diagram.
अब ट्रिक याद रखो बेटा, ये डायग्राम अगर आपको याद रही तो ये डायग्राम मेमोराइज करना है आपको, और डायग्राम की हेल्प करके आपको किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है. सो वी टेक द डायग्राम हियर, व्हाट SS PS PS clear, then SS PS PS, we take the DPS, okay, here we also take the what here, DPS, then SS PS PS, what we take here, SS, एक मिनट, SS PS PS, then DPS DPS, then FDPS, then FDPS. क्लियर. ट्रिक याद रखिए बेटा, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS. This diagram help to write the electronic configuration of any element. Now we take the numbering from the s orbital. 1s, पहले आपको नंबर देना s ऑर्बिटल को बेटा, तो 1s, देन 2s, देन 3s, देन 4s, देन 5s, देन 6s, देन 7s, and then 8s. Now s starting from the carbon s first, so we take the numbering from the s first. So we take the p, 2p, then 3p, then 4p, then 5p, then 6p, then 7p. Clear? S starting from the 1, so P start from the 2, then SP, then D start from the 3. So we take the what here, 3D, here what here, 4D, then 5D, then 6D, then D start 3, now F start from the what, 4. So here we take the 4F, and here what here, 5F, what here, 5. Now then, what is the valency of s orbital? So each has have the valencies 2, so we added 2, each s has the 2, s2, 2, 2, here 2, then 2, and then 2. What is the valency of p orbital? 10, sorry 6. So we take 6 here, each have the p is the 6 valency, 6, 2p6, 3p6, then 4p6, then 5p6, then 6p6, then 7p6. Then last third D have the valencies what here, 10. So we take the 10 here, 3D 10, then 4D 10, then 5D 10, then 6D 10. Then F has the valency what here, 14. So we take 4F 14 and 5F 14. Okay, so it is a above principal diagram. This diagram is help to write the what here, the electronic configuration of any element. Now for example, we take the example of this diagram. Question is that write down the electronic configuration of carbon. Carbon has the valency is C, what here, the carbon have the symbol is C, atomic number is 6, and mass is 12. Now question what here, write down the electronic configuration of carbon. So first of all, what is electron configuration? The distribution of electron into shell and subshell called as what here, the electronic configuration. It means the carbon have the 6 electron, these 6 electron are added into shell and subshell, or shell is also called as what here, orbit, whereas subshell is called as what here, orbital. Clear? Now we take the electron configuration carbon what here, 1s2, 2s2, 2p2. Why? Because this one indicate a shell, because the K is called as one shell. So 1 and this S indicate what is subshell. So addition of electron or distribution of electron into shell and subshell, this one called as shell and S called as what is subshell. Same here, one is shell, here subshell, this shell, subshell, shell, subshell. So distribution of electron, how many electron the carbon 6 into shell and subshell called as what, electronic configuration. So it is the electronic configuration of carbon. Clear? This diagram are help to write down the electronic configuration of any carbon. अब याद रखो बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 कहाँ पे आते हैं, वो वहाँ तक ही आपको याद रखना है. 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6.
ओके, यानी जितने इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर एलिमेंट का उतना ही आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसमें। अगर इसका नंबर 7 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन लिए नंबर 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 3 + 4 7. So distribution of electron, these 7 electron are added into shell and subshell, shell and subshell, shell and subshell called as what here, electronic configuration of nitrogen, short form EC. It's a long electron configuration. We also write a short form, what here, 2,7 2, this 2,7. It's also write short form here 2,4. short form is short form, it's a long form. ठीक है बेटा, तो अब ये डायग्राम आपको याद रखनी है। इस डायग्राम को यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती है। और ये क्वेश्चन, ये बेसिक जो है आपको सीईटी में भी, नीट में भी, और हर जो भी फील्ड है केमिस्ट्री की, वो फील्ड में आपको काम में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू शेल एंड सब शेल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक configuration. How many shell? 5 shell. How many subshell? 4 subshell. This K shell is also called the 1, L called the number 2, and M3 and N4 and O5. So addition of electron into shell and subshell what is electronic configuration. तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं इसका यूज़ करके। ये डायग्राम कैसे याद रखिएगा आप? SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा और बाद में आपको नंबर देना है, शेल का नंबर देना है आपको सभी को, और बाद में सब शेल का वैलेंसी लिखना है। तो आपको पता है एस की वैलेंसी कितनी है, 2 है। जहाँ पे एस ऑर्बिटल और 2 ऐड करना है, जहाँ पी है वहाँ 6 ऐड करना है, जहाँ डी है वहाँ 10 और एफ वहाँ 14 ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर? आप कोई भी एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट लो, कोई भी लो आप, उसमें आप ये डायग्राम आपको हेल्प करेगी। क्लियर है? कार्बन के लिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, because you know the atomic number of carbon is 6, so that's why electron proton also 6. So we added a question, what electron configuration means? Addition of electron into shell and subshell. It means one is called as shell and S called as what, subshell. Clear? Called as what, electronic configuration. So this indicate the electronic configuration what here, AC called as electronic configuration what here, carbon. It's a long form, it's a short form. Clear है ये क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आता है आपको, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वैलेंसी, हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। सो ये क्वेश्चन आना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, ये डायग्राम आपकी पार्ट है, तो आप कोई भी एलिमेंट्स का वैलेंसी निकाल सकते हो। वैलेंसी क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में वैलेंसी पढ़ेगी आप। जब तक आप ये भी जो डायग्राम है उसको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन आपको आता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन नंबर 8, फ्लोरीन नंबर 9, नियॉन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन जो रहेगी आपको सॉल्व करना है। इजी कर सकते हैं आप। सेम थिंग, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 6, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 6 इलेक्ट्रॉन इनटू शेल एंड सब शेल। तो 6 कहाँ पे आया था, 2 + 2 4, 4 + 2 6, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते हैं वहाँ तक ही लिखना है, बाकी को छोड़ देने का। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कितना, 8 है। अब 8 कहाँ पे आता है, 2 + 2 4, 4 + 4 8, सो 1s2 2s2 2p4 यहाँ पे आ जाएगा। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट हियर, ऑक्सीजन, सिंबल AC इंडिकेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट लो, उसका एटॉमिक नंबर पार्ट होना हमको और उसका सिंबल पार्ट होना। अगर वो पार्ट अगर आपको है तो ये डायग्राम आपको याद रखनी है, सिंपल। क्लियर है? और डायग्राम की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। डिफाइन समझ में है कि आपको डिफाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू शेल एंड सब शेल। तो 1 कॉल्ड एज शेल एंड 2 S इंडिकेटर सब शेल। सो इट इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सिंपल पॉइंट बेसिक्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन था, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट हियर एनी एलिमेंट। तो ये आपको सभी ब्लॉक में, यू नो द प्रेडिक्टेबल डिवाइड इनटू 4 ब्लॉक S P D F। तो S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लो, P ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो, जो भी आपको लिखना है तो आपको ये डायग्राम हेल्प करेगी। कौन सी? अब्बो प्रिंसिपल। क्लियर? एक्चुअली अब्बो प्रिंसिपल की डायग्राम है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है इसका, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द लोएस्ट ऑर्बिटल and then highest orbital. Electron are filled in a lowest orbital then highest orbital. So lowest orbital depend upon energy.
So what is the, which is the lowest orbital in this orbital? So S is the lowest orbital. Why? Because the valency is 2. So less the valency, less will be the orbital is there. Okay? So S is a less orbital, then P is a highest, then D highest, then 14. So electron are added into the what here? First lowest orbital, then highest orbital. The lowest, highest depend upon the what here? Valency. So 2 is the lowest, then 6 is the highest, then 10 also the highest, and 14 is also the highest. So electron are filled in the what here? S, then P, then D, then F. So electron filled in a lowest orbital and then highest orbital, called as the above principle. And this diagram are used to applicable in a what here? How to write the electronic configuration of any element. Okay, clear beta? Thank you so much.